Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss FSC Biology Part 1 Chapter number 4 MCQs. First MCQ, who coined the term cell? सबसे पहले किसने सेल टर्म तजवीज़ की? ऑप्शन ए शवान, ऑप्शन बी श्लीडन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी both A and B. Option C is correct. Robert Hooke coined the term cell. Next MCQ, who opposed the idea that the cell is an empty space bounded by thick wall? किसने इस आइडिया को अपोज किया? ऑप्शन ए लॉरेंस ओकन, ऑप्शन बी शवान, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी रोडोल्फ वर्चू, ऑप्शन सी इज करेक्ट रॉबर्ट ब्राउन. Next MCQ, who first observed and thus hypothesized that new cells are formed from the previously existing living cell? सबसे पहले किसने कहा कि न्यू सेल्स, नए जो सेल हैं वो पिछले सेल से मिलके बनते हैं? ऑप्शन ए थियोडोर श्वान एंड श्लीडन, ऑप्शन बी रोडोल्फ वर्चू, ऑप्शन सी लुइस पास्चर, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, रोडोल्फ वर्चू हैव सेड. इसका एक मशहूर फ़िक्रा है, ओमनिस सेलुला इज सेलुला. नेक्स्ट MCQ, रेजोल्यूशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़? ऑप्शन ए 2 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी 2 to 4 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी 24 मीटर, ऑप्शन डी 24 आर्मस्ट्रॉन्ग. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, रेजोल्यूशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ 2 माइक्रोमीटर. Next MCQ, magnifying power of electron microscope as compared to eye is? Option A 500x, option B 2.5 lakh, option C 5 lakh, option B is correct 2,50,000x. Next MCQ, in cell fractionation, various component of cells including its organelles can be isolated in different layers depending upon? Option A, their physical properties like size and weight. Option B, physical properties of the medium like its density. Option C, their electrical properties like their charge. Option D, both A and B. Option D is correct, both A and B. सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सेल के कंपोनेंट को डिफरेंट लेयर्स के अंदर अलहदा कर सकते हैं उनके साइज़ और वेट और डेंसिटी की बिना पे. नेक्स्ट MCQ, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन. प्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर परसेंटेज कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 to 40%, ऑप्शन बी 40 to 50%, ऑप्शन सी 60 to 80%, ऑप्शन डी 80 to 100%. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 60 to 80% proteins are present in cell membrane. 20 to 40% are lipids. Next MCQ, which of the statement about cell membrane is not true? कौन सी स्टेटमेंट सेल मेम्ब्रेन के बारे में ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए इट कंटेन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर. ऑप्शन बी इट इज़ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन. ऑप्शन सी इट कंटेन पोर्स thus ion being charged particles cross cell membrane much easier than neutral particle. Option D, it may get enfolded to engulf solid or liquid material. Option A, option B and option C are correct about cell membrane, while option C is incorrect about cell membrane. So option C is correct. In fact, न्यूट्रल पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से ईजिली पास हो जाते हैं, लेकिन चार्ज पार्टिकल्स डिफ़िकल्ट होते हैं पास करने में. नेक्स्ट MCQ, मूवमेंट ऑफ मटेरियल across the cell membrane which does not require the expenditure of metabolic energy. Option A active transport, option B passive transport, option C co-transport, option D counter transport. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट को किसी मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट MCQ, द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल विच इज़ फॉर्म इज़? पहली लेयर जो सेल वाल के अंदर बनती है कहलाती है? ऑप्शन ए प्राइमरी वॉल, ऑप्शन बी सेकेंडरी वॉल, ऑप्शन सी मिडल लैमेला, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मिडल लैमेला इज़ फर्स्ट लेयर टू बी फॉर्म्ड. Next MCQ, cellulose is the major component of?
Option A, primary wall. Option B, secondary wall. Option C, middle lamella. Option D, all of above. Option A is correct, primary wall. Next MCQ, strengthening material of prokaryotic cell wall is option A, cellulose. Option B, chitin. Option C, inorganic salt, silica, waxes and lignin. Option D, peptidoglycan or murine. Option D is correct, peptidoglycan or murine is strengthening material of prokaryotic cell wall. So option D is correct. Next MCQ, spherical or tubular membrane which separate the material present in endoplasmic reticulum from that of cytoplasmic material are called option A, cytosol. Option B, cisternae. Option C, polysome. Option D, cristae. Option B is correct. Cisternae are tubular membrane that separate endoplasmic reticulum material from that of cytoplasmic material. Next MCQ, which is not the function of endoplasmic reticulum. मंदरजा झैल में से कौन सा फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है? ऑप्शन ए, नर्व इम्पल्स कंडक्शन. ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. ऑप्शन सी, मैकेनिकल सपोर्ट. ऑप्शन डी, सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल. Both A, B and C are function of endoplasmic reticulum, while synthesis of conjugated molecule is not the function of endoplasmic reticulum. So option D is correct. Next MCQ, factory of ribosomal synthesis. राइबोसोम बनाने वाली फैक्ट्री किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म. ऑप्शन बी, न्यूक्लियस. ऑप्शन सी, न्यूक्लियोलस. ऑप्शन डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Option C is correct, nucleolus. Nucleolus is called the factory of ribosome. Factory of protein is called ribosome and factory of ribosomal synthesis is nucleolus. Next MCQ, the 60s and 40s subunits combine to form dash particle. Option A, 100s. Option B, 90s. Option C, 80s. Option D, 70s. Option C is correct, 80s. Next MCQ, a group of ribosome attached to messenger RNA. राइबोसोम का ग्रुप जो मैसेंजर आरएनए से अटैच होता है कहलाता है ऑप्शन ए, पॉलीमर. ऑप्शन बी, पॉलीपेप्टाइड. ऑप्शन सी, पॉलीसोम. ऑप्शन डी, मोनोमर. ऑप्शन सी इज करेक्ट, पॉलीसोम. Next MCQ, the pancreas produce secretory granules that help in digestion. These granules, after passing through endoplasmic reticulum, are pinched off from dash surface of Golgi apparatus. Option A, forming phase. Option B, maturing phase. Option C, any of them. Option D, none of these. Option B is correct. They are pinched off from maturing phase of Golgi apparatus. Next MCQ, during digesting, the phagocytosed food particle vesicle formed from the fusion of phagocytic vacuole with the enzyme secreted by a Golgi apparatus are called option A, lysosome. Option B, primary lysosome. Option C, secondary lysosome. Option D, food vacuole. Option C is correct, secondary lysosome. Next MCQ, autophagosome. Autophagosome are option A, those lysosome which eat part of their own cell to generate energy. Option B, those lysosome which eat old and worn out cellular organelles. Option C, lysosome which help in extracellular digestion. Option D, both A and B. Autophagosome are both A and B. Options are correct. Next MCQ, cellular organelles related to hydrogen peroxide are option A, glyoxysome. Option B, lysosome. Option C, peroxisome. Option D, ribosome. Option C is correct, peroxisome organelles are related with hydrogen peroxide. Next MCQ, which of the following statement is incorrect about glyoxysome? कौन सी स्टेटमेंट ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, दे कंटेन एंजाइम विच हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. ऑप्शन बी, दे आर abundant in soya beans but absent in pea. Option C, they are present throughout the life of plant and provide them with energy through the glyoxylate cycle. Option D, they are single membranous organelles. Option A,
option B and option C are correct about glyoxysome, while option C is incorrect about glyoxysome. They are present only in the germination period. So this option is incorrect. Next MCQ, which of the following cytoskeletal fiber contain tubulin protein? कौन सा साइटोस्केलेटल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, वन विच हेल्प्स इन द असेंबली ऑफ स्पिंडल्स ड्यूरिंग माइटोसिस. Next MCQ, centrioles are composed of dash triplet of microtubules. Option A 3, option B 9, option C 10, option D 15, option B is correct 9. Next MCQ, the human naked eye can differentiate between 2 points which are dash apart. आम इंसानी आँख कम अज़ कम 2 पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क वाज़े कर सकती है, जिनका साइज़ ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर अपार्ट, ऑप्शन बी 0.1 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1.0 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1 डेसीमीटर. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 1 मिलीमीटर अपार्ट. Next MCQ, ribonucleoprotein particles are the name of option A DNA, option B nucleus, option C eukaryotic ribosome, option D RNA, option C is correct, eukaryotic ribosome. Next MCQ, group of ribosomes attached to messenger RNA is polysome, phagosome, polysome, none of these. Option A is correct. Next MCQ, in Golgi apparatus, the maturing phase is option A biconcave, option B convex, option C spherical, option D concave. Maturing phase is concave. Next MCQ, proteins and lipids are converted into glycolipids and glycoprotein by adding carbohydrates by प्रोटीन और लिपिड्स में जब कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया जाता है तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. ये काम कौन सी ऑर्गेनेली करती है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, गोल्जी अपरेटस. नेक्स्ट MCQ, amoeboid movement and movement of cyclosis is due to option A microfilament, option B microtubules, option C intermediate filaments, option D cytoskeleton. Option A is correct, microfilaments are involved in cyclosis. Cyclosis mean internal motion of cell. Next MCQ, of the following which one is not the characteristic of mitochondria? It contains F1 particle, it is involved in synthesis of protein, it is self-replicating organelle, number of mitochondria is constant. Option D is incorrect about mitochondria. So option D is incorrect. Next MCQ, chlorophyll is an dash molecule. Option A inorganic, option B cationic, option C anionic, option D organic. Chlorophyll is an organic molecule. Next MCQ, the part of chloroplast where CO2 is fixed to manufacture sugar is called option A stroma, option B grana, option C thylakoid. Option A is correct option, stroma. स्टोमा में CO2 की फिक्सेशन होती है ताकि शुगर मैन्युफैक्चर कर सकें. नेक्स्ट MCQ, the type of plastid which help in pollination is option A chromoplast, option B leucoplast, option C chloroplast, option D all of these. Option A is correct, chromoplast help in pollination. Next MCQ, ribosomes are assembled in. राइबोसोम्स कहाँ पे असेंबल होते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी DNA, ऑप्शन डी RNA. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम असेंबल होते हैं और उसके बाद साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं. नेक्स्ट MCQ, द प्लेस ऑफ सेंट्रोमेयर वेयर स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड. Option A kinetochore, option B kynochore, option C centromere region, option D all of the above. Option A is correct, kinetochore. Next MCQ, which of the following is not present in mitochondria? Option A enzyme, option B coenzyme, option C ribosome, option D thylakoids,
Option D is correct. Thylakoids are not present in mitochondria. Thylakoids are present in chloroplast. Next MCQ. The spent energy in the form of ADP is regenerated by mitochondria into AMP, ADP, ATP. Option D, all of these. Option C is correct, ATP. Next MCQ, which of the following combination is an example of self-replicating organelles? Option C is correct, mitochondria and chloroplast are self-replicating organelles. Next MCQ, chlorophyll molecules contain dash as central metal ion. Option A iron, option B magnesium, option C zinc, option D copper. Option B is correct, magnesium. Chlorophyll molecules resemble the heme group of hemoglobin. हीम ग्रुप के अंदर आयरन आयन होते हैं जबकि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आयन होते हैं. नेक्स्ट MCQ, on which of the following component of chloroplast chlorophyll is arranged? Option A cell membrane, option B matrix, option C thylakoid, option D stroma. Option C is correct, thylakoids. Next MCQ, number of nuclear pores per nucleus in an RBCs. RBCs are also called erythrocytes. Option A 1 or 3, option B 3 or 4, option C 10,000, option D 30,000. Option B is correct. 3 or 4 nuclear pores are present per nucleus in an RBCs. Next MCQ, which of the following impart red color to rose petals? Option A chloroplast, option B chlorophyll, option C chromoplast, option D leucoplast. Option C is correct, chromoplast. Chromoplast is type of plastid which impart all colors other than green. Next MCQ, which statement about plastid is correct? कौन सी स्टेटमेंट प्लास्टिड के बारे में दुरुस्त है? ऑप्शन ए दे कंटेन DNA एंड राइबोसोम, ऑप्शन बी दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी दे आर पावर हाउस ऑफ सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. Option A is correct about plastid. They contain DNA and ribosome. Next MCQ, Golgi apparatus was discovered by Golgi in 1898. So option C is correct. Next MCQ, Tay-Sachs disease is caused by option A accumulation of glycogen, option B accumulation of lipid, option C accumulation of proteins, option D accumulation of vitamin. Option B is correct, accumulation of lipids. Next MCQ, detoxification of harmful drug is the function of option A rough endoplasmic reticulum, option B smooth endoplasmic reticulum, option C both A and B, option D none of these. Option B is correct, smooth endoplasmic reticulum detoxify the harmful drugs. So option B is correct. Thank you for watching.